Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर एके भट्टाचार्य। एके भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। The stock market, Sensex gains 142 points, Nifty adds 22 points. Hindalco's quarterly net profit plunges 63% to 1,362 crore rupees. And IMF appreciates India's strong economic performance in challenging global times and its role at the forefront of digitalization of the economy. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स 142 अंक कुचला, निफ्टी 22 अंक ऊपर आया। हिंडाल्को का शुद्ध तिमाही लाभ 63% घटकर 1,362 करोड़ रुपए हुआ दर्ज। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंक यानी 0.2% की बढ़त के साथ 60,806 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22 अंक यानी 0.1% बढ़कर 17,893 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स मामूली घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की गिरावट हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 142 points or 0.2% to close at 60,806 today. The Nifty at the National Stock Exchange moved up 22 points or 0.1% to 17,893. But the broader market underperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index ending marginally lower and the Small Cap Index shedding 0.2%. Sectorally, on the BSE, the Commodities Index declined 1%. The Power and the Utilities Index lost 0.9% each. The Realty and Telecom Index fell 0.6% each. The Healthcare Index dropped 0.4%, and the Auto and the Energy Index shed 0.3% each. Among advancing indices, the IT Index rose 0.9%, the Tech Index added 0.7%, and the Industries Index gained 0.4%, and the Capital Goods inched up 0.3%. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 63% घटकर 1,362 करोड़ रुपए रह जाने की सूचना दी है। कंपनी का राजस्व वार्षिक आधार पर 6% बढ़कर 53,151 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। राजस्व में वृद्धि अधिक होने और देश भर में स्थिर संचालन से यह वृद्धि हुई है। Driven by buoyant SIP flows, equity mutual funds have attracted 12,546 crore rupees in January, making it the highest net infusion in 4 months despite volatility in stock markets. Prior to that, equity mutual funds witnessed flow to the tune of rupees 14,100 crore rupees in September.
This was also the 23rd straight month of inflows into equity-oriented mutual fund schemes, data with the Association of Mutual Funds of India showed today. Monthly systematic investment plan contributions also maintained their upward trajectory, rising over 2% month-on-month to 13,856 crore rupees in January. The number of SIP accounts rose 23% year-on-year to 6.22 crore last month. In equity, small-cap funds saw net inflows of 2,256 crore rupees in January. Over the past several months, investors have been flocking to small-cap funds following a correction in their valuation. एकेबी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ही प्रदर्शन रहा है बाजार का। लगातार दूसरे दिन यानी बाजार में पिछले कुछ सत्रों से हम तेजी का सिलसिला देख रहे हैं। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? वॉलेटिलिटी अभी भी है। अगर आप सेक्टर्स को देखेंगे, कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, उसमें तेजी है। पर अगर आप और सेक्टर्स में, कमोडिटीज में, एनर्जी में, पावर में, बैंकिंग में, उसमें उतनी तेजी नहीं है। पर ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है कि जो बजट के पहले जो मार्केट में जो थोड़ी बहुत जो वॉलेटिलिटी जो एक आई थी, वो बजट के जो प्रपोजल्स हैं उसको ठीक तरह से उनको मार्केट ने इंटरनलाइज करने के बाद मैं समझता हूं कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आने की उम्मीद हम देख रहे हैं आज 2 दिन की मार्केट मूवमेंट से। Okay, KB, we will be giving you the figures on the U.S. markets in a short while. The domestic markets traded close to the flat line as more and more Fed speakers are echoing Jeremy Powell's aggressive remarks. So in light of that, FII selling continued to lower investor confidence, but there has been significant DII's support, and that is providing a lot of comforting cushion. So what's driving the DIIs? Well, what is driving the DIIs is the overall macroeconomic conditions which have been projected not only by the budget but also endorsed largely by the Reserve Bank of India in its monetary policy review, which was announced yesterday. What these two, the government, the finance ministry, as well as the Reserve Bank of India, indicate is that the growth momentum may not be the same as is being witnessed in the current year, which is 7% growth, but RBI is saying it will be 6.4%. The government of India is saying it is 6.5%. So if you take the average figure, it will be somewhere between 6.3 or 6.6. Now, that kind of a growth rate at a time when there are global headwinds, trade not doing too well, even though China is making a strong comeback, given its latest numbers and projections, is probably strengthening the optimism of the domestic institutional investors, and which is why they are coming back in a way that is not being matched by the foreign institutional investors, because Jeremy Powell, as you rightly pointed out, is very hawkish as far as the rate tightening cycle is concerned. The Reserve Bank of India governor, on the other hand, has actually reduced the pace of increase. He is also saying that the next hike or whatever next rate decision will depend on the incoming data. So he's kept all options open. And if you look at the composition of the Monetary Policy Committee, out of 6 members, 2 members have actually differed with the majority view that the rate hike should come to a halt. There should be a pause. So the markets are all reading these signals that if not next policy review, but at least the one following that, the rate hike cycle is coming to an end. A pause is
round the corner, on the horizon, and the markets are... That's a positive sentiment. Positive sentiment, that is what it is creating. Okay. Do you think in the given scenario, then the investors need to adopt a value buying as a strategy? There is no doubt about it. There's no doubt about it. I think what is very clear, according to investors, from the investors' point of view, that look at sectors that are expected to yield better returns. Look at sectors that will be riding high on the return and sustain growth in sectors such as tourism, hospitality, healthcare, digital infrastructure companies, digital healthcare companies. Now all these sectors will keep the mood in the market buoyant on those areas. यहाँ पर हम ये समझना चाहिए कि निवेश करते समय क्षेत्रों के बारे में जानकारी तो आपने दी कि जो आसार हैं, वैश्विक परिस्थितियां, आंतरिक स्थितियां हैं, उनमें ये क्षेत्र बेहतर हो सकते हैं निवेश के लिए। लेकिन ऐसे निवेश करते समय एक निवेशकर्ता को, और खासतौर से जो छोटे हमारे आम श्रोता हैं सुनने वाले, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए किसी सेक्टर में निवेश करते समय? अगर जो सेक्टर की जो वृद्धि का जो आसार जो है, जो स्कोप जो है, वो अगर ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर हुआ, टूरिज्म सेक्टर हुआ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हुआ, एयरलाइन सेक्टर हुआ, आपने अगर पिछले एक हफ्ते में अगर रिजल्ट्स जो आए हैं, रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा किस किस सेक्टर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ी है। जैसे इस तिमाही में जिसके रिजल्ट जो आए हैं, जो तीसरी तिमाही की जो रिजल्ट जो आ रही हैं, उसमें पहली बार जैसे एयरलाइन सेक्टर की जो सारी रिजल्ट जो आई हैं वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आई हैं। इसका मतलब वो सारे सेक्टर अपना कॉर्पोरेट अर्निंग्स वृद्धि होने की एक संभावना दिख रहा है। तो मैं समझता हूं इसका प्रतिफलन मार्केट में भी आएगा। तो अगर जो खुदरा निवेशक जो है वो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्टॉक को वो और कौन से सेक्टर को उसे निवेश करना चाहिए। अगर सिर्फ सेंसेक्स में निवेश करना या निफ्टी में निवेश करना, मैं समझता हूं इस वक्त एक शायद सेफ स्टेप होगा, पर वो ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेप शायद नहीं होगा। आपको सेक्टर लेवल में जाकर किस सेक्टर में वृद्धि की स्कोप ज्यादा है उसी में जाना बेहतर रहेगा। We also had the story on mutual funds and how they have attracted 12,546 crore rupees in the month of January itself. Add to that is the small cap funds which have seen the inflows of 2,256 crore rupees. So is this due to decrease in valuation in long-term averages? So therefore, is that making small cap companies more appealing? I think there was a time when the small cap sector had run up in the price ladder quite fast, and then there was some correction, and what we are seeing right now is one more period of opportunity for the small cap sector to make some gains. But on a larger level, on a plane, what I would say is this, that the return of the mutual fund sector is pretty broad-based. And this return of the mutual funds through the SIP route or systemic investment plan route, or even for specific funds, equity-oriented funds, what it tells you is that the investors' interest in the stock market is not on the wane. And remember that this is a January figure. This is before the budget, and clearly these positions are being taken before the budget, and the budget has not had any nasty surprises for the markets. Okay. There is no announcement on the capital gains rate structure change. Correct. So there is stability. So therefore the mutual fund segment is also gradually coming back, and which is towards earlier level of activity. Okay. And as a result of which also the stock market is also reflecting that. What about Hindalco's performance?
Well, Hindalco is in a sector where its profits have plunged, but it's still profitable. Its domestic demand has actually been hit, and if you take the year-on-year numbers, a 6% growth or what single-digit growth is not something that can sustain the profit of a large company like Hindalco. So it is reflecting that tepidness in the overall aluminum sector. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की विभिन्न टिप्पणियां और चीन में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से निवेशकर्ताओं में आज यह धारणा दिखी कि इस वर्ष वहां की अर्थव्यवस्था फिर से वापसी करेगी। इन सब खबरों का मिलाजुला असर विभिन्न एशियाई बाजारों में दिखा है। एक ओर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 0.1% घाटे में रहे, वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.9% लुढ़क गया। निवेशकर्ताओं की लिवाली से दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसिंग में 1.6% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर नजर डालें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 1.3% बढ़त में चल रहे थे। On Wall Street, key indices, U.S. stocks ended lower yesterday with tech-focused shares pulling the markets down. Google's parent company, Alphabet, was the biggest drag on the S&P 500 and Nasdaq. Alphabet sank 7.7% after its new AI chatbot, Bard, delivered an incorrect answer in an online advertisement. Adding to the cautious mood, Federal Reserve's officials yesterday said more interest rate rises are on the cards as the U.S. central bank moves ahead with efforts to control inflation. None hinted, though, that January's strong jobs report could drive more aggressive policy actions. So the Dow Jones Industrial Average fell 208 points or 0.6% to end at 33,949. The S&P 500 lost 46 points or 1.1% to close at 4,118, and the Nasdaq Composite dropped 203 points to 1.7% to 11,911. AKB, quickly, the U.S. Central Bank's battle to reach its 2% target might be a long fight. It's a far cry, actually, right now. And as you read out just now, more rate action is on the cards. Two things I would like your attention to be focused. One is the unexpected recovery signals from China, which is also having an impact on the U.S. situation. And two is the fact that the U.S. job market is still showing tremendous buoyancy, and that despite that, so therefore the Fed is pretty nervous. Not nervous. They realize that to cool down the economy, you need further rate action. So you think that the monetary policy will be kept tighter for longer than anticipated? Absolutely. Probably that is not going to be the trajectory in India, but in the US, certainly that is the trajectory. Moving on, the International Monetary Fund, IMF, has appreciated India's strong economic performance in challenging global times and its role at the forefront of digitalization of the economy. Finance Minister Nirmala Sitharaman and Managing Director IMF Kristalina Georgieva today held a virtual conversation to discuss the upcoming G20 finance ministers and central bank governors meeting scheduled to be held in Bengaluru later this month. Ms. Sitharaman informed that debt discussions will be at the forefront of G20 finance track discussions, and India will continue to support the ongoing efforts for orderly and timely implementation of the common framework.
During the discussion, both the leaders recognized that the voices of the most vulnerable and underrepresented needs to be heard through the leadership of the G20 nations. Finance Minister Nirmala Sitharaman stressed on the need to ensure food and energy security for all. She asked the IMF for support to the Indian presidency in the form of detailed technical analysis to develop evidence-based policy guidance on the issue. AKB, quickly we would like you to throw some light on the G20 finance track discussions that are going to take place and what efforts are they going to implement through the common framework. Sure, absolutely. I think what is happening is that India is now enjoying the presidency of G20, and as part of that, there will be a finance track meeting at the end of this month in Bangalore, and the key issues to be discussed is the debt situation, because as you know that even though India's overall debt situation is around 80% of GDP, there are many member countries in G20 who are way above that, and the global fiscal consolidation program can be kept in view and can be implemented properly only if the debts remain under control. So this G20, the Common Framework Program, will primarily look at the steps that need to be taken to control this debt overhang on the global economies. Now, as you know that if the debts remain uncontrolled and keep rising, what happens is for a country like the US, because it is an all dollarized debt, they may have a different kind of problem. But other countries, other G20 major countries can have serious consequences, adverse consequences for price control, inflation management, as well as growth. So therefore, this G20 forum in Bangalore will probably come out with a kind of a new framework on what needs to be done to keep the debt situation under control for all the G20 member countries, and that India's debt situation is not that healthy, but it is definitely better than many other G20 countries. India's voice will be heard with greater credibility and greater force. AKB दोनों यानी बैठक के दौरान दोनों नेताओं की ओर से कहा गया कि जो सबसे अधिक वल्नरेबल हैं और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है उनको G20 देशों की अध्यक्षता में उन पर ध्यान दिया जाए। इसका क्या आशय हुआ और क्या कह लें कि इसका महत्व है और किस तरह ये लाभ पहुंचाएगा? देखिए, जो ऐसे बहुत G20 के मेंबर कंट्रीज जो हैं और जो विश्व में अगर आप देखेंगे, जो जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद और कमोडिटी सेक्टर्स में जो दामों की चढ़ाव उतराव हुए हैं देखे हैं, उसमें काफी अर्थनीति का विश्व की अर्थनीति काफी वल्नरेबिलिटी या दुर्बलता की ओर पहुंच गए हैं। तो जो हमारे वित्त मंत्री का जो इशारा था वो यही था कि किस तरह से ये जो देश G20 में पूरी तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं है, पर उनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, जो वल्नरेबिलिटीज ऊपर आ रही हैं, उसको G20 एक नेतृत्व स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से किस तरह से उसको संभाला जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इससे भारत की जो G20 की जो प्रेसिडेंसी जो लीड कर रही है, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक जिसे हम प्रिंट जिसे कह सकते हैं, भारत अपना प्रिंट रख सकता है। So, for taking care of the needs of the vulnerable and the underrepresented, there is a need to ensure food and energy security for all, and that is what the FM has stressed upon. So, how do you think the G20 will put all its resources together to ensure that food and energy security is there for all? Well, G20 is a recommendatory body. What it will do is outline a new framework by which the vulnerable countries do not go through a crisis caused by inadequate food availability or energy insecurity. Now, as you know, that energy front is very, very volatile right now, and till we see some sort of an end to the Russia-Ukraine conflict,
And even otherwise, the oil-producing countries are just waiting for a next opportunity to increase prices. So therefore, that will create a further uncertainty in the energy market. On the food side, while India is secure, there are many countries which are going through acute food shortages, food crisis of sorts. There are countries in Africa, there are countries in Asia. I wouldn't like to name them. So both food security and energy security are very, very important and critical elements in this new framework, which are eventually linked to ensuring financial stability in the world. Because if countries go down the ladder because of their food crisis and energy crisis, then overall global growth will get affected, and therefore global demand will be affected, and so there'll be a vicious cycle of low demand, low growth, and we might just get into another crisis which we need to avoid at all costs. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। क्रिसिल ने संभावना जताई है कि वित्त वर्ष 2023 में बासमती चावल क्षेत्र का विकास अब तक के सर्वाधिक स्तर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकता है। मीडिया में जारी एक विज्ञप्ति में क्रिसिल ने कहा कि मांग में वृद्धि और ऊंचे मूल्य के कारण क्षेत्र का विकास होगा। कंपनी ने वार्षिक आधार पर बासमती चावल की बिक्री 30% से अधिक बढ़ने की संभावना जताई है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि मांग घटने से अगले वित्त वर्ष में बासमती चावल की बिक्री 5 से 7% तक घट सकती है। साख निर्धारण एजेंसी क्रिसिल के अनुसार इस दौरान चावल निर्यात में वार्षिक वृद्धि 11% बढ़कर 44 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका से चावल की मांग बढ़ने की संभावना भी कंपनी ने जताई है। बहुत संक्षेप में यहां पर हम समझना चाहेंगे, भारत ने लगभग लंबी अवधि तक बिना किसी संकट के अपने लोगों को मुफ्त का भोजन उपलब्ध कराया, यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में, और निर्यात के मोर्चे पर भी कृषि उत्पादों का निर्यात बेहतर रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या आसार दिख रहे हैं अपने कृषि क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र में पहली बात तो ये है कि जो मुफ्त अनाज का जो बंटन जो हुआ है वो 1 साल तक और भी बढ़ा दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिसंबर 2023 तक ये चलेगा। और जो बासमती राइस की जो निर्यात की बात कर रहे हैं, वो हमारी देश की एक ऐसी कृषि क्षेत्र की एक ऐसी रेम्यूनरेटिव सेक्टर है जिसमें हम विश्व में एक पहले या दूसरे दर्जे में हम रहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो फोकस बासमती के ऊपर दिया जा रहा है उससे ना ही डोमेस्टिक कृषि क्षेत्र में एक स्ट्रेंथनिंग होती है, पर देश की जो एक्सटर्नल सेक्टर जो है, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, उसमें भी काफी वृद्धि होती है। Moving on, global crude oil prices were steady today as optimism over recovering Chinese demand was offset by U.S. oil inventories hitting their highest in months and signs the U.S. Federal Reserve could keep raising interest rates. So the Brent crude futures gained 30 cents to trade at $85.39 a barrel. The U.S. crude futures inched up 26 cents, $78.73 a barrel. आइए चलते हैं सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज मिला जुला रुख दिखा है। एक और मांग निकलने से सोने के मूल्य में 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके भाव 57,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी 5 रुपए घटकर 67,941 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रह गई। यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। Thank you, AKB, for being with us. And before we close, the headlines once again. At the stock markets, Sensex gains 142 points, Nifty adds 22 points. Hindalco quarterly net profit plunges 63% to 1,362 crore rupees. And IMF appreciates India's strong economic performance in challenging global times and its role at the forefront of digitalization of the economy. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.